Hello everyone, this question appears in class 6th NCERT chapter of Playing with Numbers. This is 5th question of its exercise 3.3. So the question says that write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. So the divisibility rule of 3 is all the digits in the number, sum of all digits is divisible by 3, then the complete number is divisible by 3. So for part A, sum of given digits is equal to 6 plus 7, 13 plus 2, 15 plus 4, 90. So हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट फॉर द ब्लैंक स्पेस, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3. सो डिजिट्स का सम है 19. सो नेक्स्ट हो जाएगा फॉर स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट इज इक्वल टू 19 के आगे हमें 3 से डिविजिबल देखना है तो होगा 21. सो हमें प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा 21 के लिए. सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट आएगी 2 एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इज इक्वल टू, सो 2 हो गई स्मॉलेस्ट. सो 2 के बाद हम 3 से डिविजिबल के लिए 3 ऐड करते जाएंगे. 3 प्लस 3, अब नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 3 प्लस 3 8. नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, जबकि हमें ओनली 1 डिजिट चाहिए. सो यही हमारी हो जाएगी ग्रेटेस्ट डिजिट 8. फॉर पार्ट बी, सम ऑफ given digits is equal to 4 plus 7, 11 plus 6, 17 plus 5, 22 plus 2, 24. So here 24 is divisible by 3. So the complete number is divisible by 3. So smallest digit is equal to 0. हम यहाँ 0 प्लेस कर देंगे तो ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. सो एंड नेक्स्ट ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट के लिए हम इसमें 3 ऐड करते जाएंगे. 3 प्लस 3 प्लस 3 ये जाएगा हमारे पास 9. देन अगेन 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 और हमें चाहिए ओनली सिंगल डिजिट. सो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9. So 24 plus 9 is equal to 33 is divisible by 3. So the complete number is divisible by 3. So the smallest digit is 0 and the greatest digit is 9. Thank you.